So, we are going to discuss what is the difference between present perfect, past simple and past perfect. सबसे पहली बात, इसको लेके एक बड़ा कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं जो चीज थोड़ा देर पहले हुई वो प्रेजेंट परफेक्ट, जो चीज और कुछ दिन पहले हुई, एक दो साल पहले हुई, वो पास्ट सिंपल, और जो चीज और भी पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट। और हमें स्कूल में हिंदी में अजीब प्रकार से सारी बातें सिखाई गई। हमें सिखाया गया उसने खाना खा लिया है या वो खाना खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसने खाना खाया, पास्ट सिंपल। और वो खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। ऐसा हमें सब सिखाया गया। इन चीजों का सत्य से कोई संबंध नहीं है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, when two people are talking in English, when two people are talking in English, no Hindi will come. When no Hindi will come, that is, then you have to understand how to use present perfect, past simple and past perfect, or where to use these tenses. तो let's discuss about it. सबसे पहली बात, एक कॉमन बात यह है कि इन तीनों चीजों में जो घटना थी वो हो चुकी है। द एक्शन इज डन। एक्शन इज डन इन प्रेजेंट परफेक्ट ऑल्सो, इन पास्ट सिंपल ऑल्सो एंड पास्ट परफेक्ट ऑल्सो। अब थोड़ा सा ध्यान से समझें। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एक्शन इज डन। दैट डज नॉट मैटर action is done 10 years before, 20 years before, or just 10 minutes before. The meaning of present perfect is that action is done. Action is done and you do not mention when the action is done. You are simply telling that action is done. Somebody has asked you, has the class started? And you have answered, yes, the class has started. Has he come to the class? Yes, he has come to the class. Have you attended the lecture? Yes, I have attended the lecture. So, present perfect simply giving an information that action is done or not done or yet not done. The main feature of present perfect that in present perfect you need not mention the time. Right? I think that should be clear to you. एक बहुत important बात है. Second, in present perfect sometime we mention the time also. For example, we can say today, we can say this week, we can say this month, we can say this year. Why we can say? Because today is still running, this week is still running, this month is still running. So when you are talking about the time that is running, that timing will be included in present perfect. But in present perfect you cannot use yesterday or last week or last month or last year. Am I clear, friends? So that I have talked about present perfect. Now, first of all, present perfect has nothing to do with past simple and past perfect. Now, let's talk about past perfect and past simple. So, past simple is used for episodes. Whenever you have to narrate an episode, all the episode happens in the past, that we already know. Whenever you are supposed to narrate an episode, you have to use past simple. Past simple and past continuous both. Sometimes you start with past continuous, sometimes you start with past simple, and you keep using both of them. For example, yesterday I was attending an important session.
and my daughter was constantly disturbing me. Then I asked my wife, so she gave her some toys, something to eat, and then she got engaged. So you understood this? I have used past continuous also and past simple also. So episode, we keep using past simple and past episodes. Sorry, past simple and past continuous. Past perfect is something entirely different. Past perfect enters only when you share two episodes together. When two episode takes place together, they are interlinked. जब भी हम दो एपिसोड बताते हैं तो उन दो एपिसोड में से जो एपिसोड पहले होता है दैट इज पास्ट परफेक्ट, और जो एपिसोड बाद में होता है वो पास्ट सिंपल, लेकिन दोनों एपिसोड जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मेरे लॉगिन करने के बाद सब लोगों ने ज्वाइन किया, मेरे लॉगिन करने के बाद सब लोगों ने ज्वाइन, पहले कौन सी घटना हुई? पहले मैंने लॉगिन किया, तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। आफ्टर आई हैड लॉग्ड इन, द पास्ट परफेक्ट। दूसरा पास्ट सिंपल होगा, आफ्टर आई हैड लॉग्ड इन एवरीबडी ज्वाइन। ठीक है सर। पास्ट परफेक्ट विल ओनली बी यूज when two linked episodes are there. Until and unless two episodes come, there is no need of past perfect. सबके जाने के बाद उसने मुझे बुलाया। पहले कौन सी घटना हुई? पहले सब चले गए। आफ्टर एवरीबडी हैड लेफ्ट ही कॉल्ड मी। ठीक है। मेरे वहां पहुंचने के पहले ही घटना घट चुकी थी। घटना पहले घट चुकी थी, वो परफेक्ट होगा। बिफोर आई रीच देयर द एपिसोड हैड हैपेंड। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हमने अलग कर दी। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपली इज दैट समथिंग इज डन and you are sharing to somebody else. It has nothing to do with past simple and past perfect. Past simple and past continuous are used for episodes, and past perfect will only be used when there are two episodes. Am I clear, friends? Any confusion? Vedant?